Welcome students in 8th class. Today we will discuss chapter 1, the cell, its structure and functions. So, firstly we should know about the term cell. Cell is the basic structural as well as functional unit of all living organism. Students, as a building is made up of bricks, similarly the bodies of all plants and animals are made up of single unit that is called cell. Discovery of cells. Cells are the basic structures of all living beings, yet they named undiscovered for a long time. स्टूडेंट्स, सेल की डिस्कवरी काफ़ी टाइम तक हुई नहीं थी. दिस इज़ बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज़. सेल का साइज इतना छोटा था कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे. सो आफ्टर द एडवेंट ऑफ self-designed microscope by the Robert Hooke, cell was discovered. रॉबर्ट हुक ने खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद ही सेल की डिस्कवरी हुई. सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप इन 1665. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइसेस को लिया और माइक्रोस्कोप से जब उसने देखा तो क्या पाया कि जो कॉर्क है वो लिटिल कंपार्टमेंट्स से बना है. मीन्स उसमें स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं. डैट इज़ कॉल्ड सेल. इन दिस वे सेल वॉज डिस्कवर्ड. सो our next topic is variation in cell number, shape and size in living organism. Students, as the living organisms are made up of a single unit that is called cell, so different organism have different number of cells. The difference in the size of the organism is due to the number of cells present in them. स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनके साइज़ का में डिफरेंस है वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. नंबर ऑफ सेल के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म an organism made up of single cell. Students, some cell exist as unicellular organism. It means some organism have only single cell to perform all activities. That is called unicellular organism. These organisms are very small and need to be seen with a microscope. So these organisms cannot be seen with the naked eyes. Examples of unicellular organism: amoeba, bacteria, protozoa, all are unicellular. It means these living organisms have found only single cell which perform all the activities. Next is multicellular organism. Multi means more than one cell. Organism made up of 2 or more cells, that is called multicellular organism, and these organisms are able to be seen with the naked eyes. Examples of multicellular organisms are humans, cats, dogs, insects, birds, flowers, mold, trees. All these have more than one cell, so come in the category of multicellular organisms. Cell shape.
Students, the shape of cell differ not only in different organism but also in different organs of the same organism. Note it please. जो शेप ऑफ सेल्स है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ही डिफ़र नहीं करती, बल्कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में उसके ऑर्गन्स के बेस पर भी डिफरेंट होती है. दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबिडॉयल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल. इट मीन्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी सेल की जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है. You can see the different types of cell shape: red blood cell, bone cell, ovum, sperm cell, white blood cell, neuron. All these have different shape and it may be in single organism. Next is cell size. Students, the cell vary in size. It means a living organism have different types of cells which vary in their size. Some cells may be small and some may be large. So the smallest cell is PPLO. Full form is Pleuropneumonia like organism, which is about 0.1 micron, and 1 micron is equal to 10 raised to power minus 6 meter. And the largest cell found is the ostrich egg, which is 170 millimeter in diameter. You can see the table which have different organism and their cell size vary. Amoeba 1000 micrometer, ostrich egg 170 millimeter, human ovum 0.1 millimeter, red blood cell 9 micrometer, liver cell 20 micrometer, green alga 10 centimeter, hen's egg 60 millimeter, nerve cell about 1 meter. So cell vary in their numbers, in their size and in their shape. Thank you.